Good evening, क्या हाल चाल है सबके? I Yash Tugad, founder of CREALTH EDUCARE. I welcome you all to Market क्या लगता है. Uh, it's a, it has been a great last week for the markets, yes, but of course the main point is what's ahead lying of us, right? So वो हम आज details में discuss करने वाले हैं, right? And of course we are also going to discuss some interesting points on few charts. Okay, so I would request everyone टू स्टे टिल द एंड, राइट. एंड आज हम बहुत सारी चीज़ों का डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे वेर यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस आल्सो, राइट. सो सबसे पहले तो इफ़ माई वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल टू एवरी वन and charts of Nifty is clearly visible, just a quick yes on the chat box please, so that I am sure that yes. ये जल्दी से मुझे बताएं चैट बॉक्स में. Okay, so I think it's ready. So let's start with this session, of course. Okay, so today, of course, we are going to discuss first on how the markets are going to be, right? तो सबसे पहले तो I think yes, so I think so let's start our discussion on Nifty, right? So Nifty, of course, last week exactly bounced back from where we had discussed, like 23,200, 300 was a strong support zone, right? From there it bounced back. And the most heartening thing was that it was a breakout on Thursday where Nifty closed above 24,450, 24,500. मैंने पहले भी कहा था 24,450, 24,500 is a strong resistance zone, right? Is my voice clearly audible and the charts of Nifty visible? Just quickly a yes on the chat box, please. जल्दी से मुझे बताएं चैट बॉक्स में. यस यस, परफेक्ट, ग्रेट. Okay, so of course last week's closing has been very strong and it's a very good closing. So I would say yes, Nifty is on the bullish side. Okay, but 24,450, 24,400 will be I would suggest as the stop loss for the longs, right? Not a stop loss I would say, but a level where long should be again be cautious, right? तो 24,400 के जब तक हम ऊपर है तब तक वो टेंशन की बात नहीं है. ओके, एंड एक चीज़ का और हमें ध्यान रखना है कि निफ्टी दो हैज़ मल्टीपल रेजिस्टेंसेज ओवर है बिकॉज 24,800 इज ऑल्सो रेजिस्टेंस, राइट, has given a breakout, right? So it's a breakout which is clearly there, right? So we are now more on the strength side rather than weaker, but I would say we should be cautiously optimistic again because we have had a very good rally from the lows, right? But again, my view will be bullish, right? And 24,400 जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक डरने की बात नहीं है निफ्टी में. यस, the only I would say point to be little cautious is that still the macros have not been that great. आपने देखा होगा the GDP data, the overall GST collection, overall auto sales data were not that great. तो वो of course these are all historical data, futuristic data नहीं. But अगर futuristic data और अच्छे आते then I think markets will bounce back very strongly. बैंक निफ्टी मैंने बहुत बार कहा, पहले भी कहा कि बैंक निफ्टी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है एंड इट इज़ मच मोर स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी, एंड वही हुआ है.
So how many of you still believe that Bank Nifty is more stronger than Nifty? Just quickly tell me on the chat box, please. What do you think? Nifty should outperform now or out Bank Nifty? जल्दी से ऑडियंस मुझे बताएं चैट बॉक्स में. Because Nifty versus Bank Nifty, it has been a tough battle, but I think Bank Nifty has won it, right? But especially after the RBI policy last week. What do you think? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ प्लीज, because I want to understand what the audience also thinks, right? And what the audience kind of believes regarding the market. Okay, so Deepak ji is telling Bank Nifty, Amit ji is telling Bank Nifty. Okay, so Bank Nifty, Bank Nifty, Bank. Okay, so it's overall Bank Nifty. Only one is telling Nifty would outperform. Okay, very good. तो इसका मतलब जनता is also with Bank Nifty. Okay, and Bank Nifty का एक reason भी है. The RBI has cut the CRR by 50 basis points last week, right? So that's also positive for the banks, right? But yes, Bank Nifty is more stronger, no doubt about it. There's a small resistance at 53,800, and of course the last all-time high, right? But Bank Nifty is still more stronger, and especially again I would be emphasizing on the PSU banks. Again, a disclaimer from my side: all the stocks or whatever sectors we discuss is purely for education purpose. These are not recommendations. Please consult a financial advisor. We are not responsible for any of your action. This is purely educational बेटा. तो फ्रेंड्स, मैंने पहले भी PSU बैंक्स के बारे में काफ़ी बार बात की है, राइट? So now let's break down Bank Nifty. What do you think? PSU banks should outperform now or private banks? जल्दी से, I think our audience is very smart today, right? So I think they'll be able to judge better. So what do you believe? PSU versus private. Which bank do you think? Because अभी हम एक extensive chart discussion करने वाले हैं. Okay. PSU, okay. PSU, okay. So PSU banks, so everyone is telling which PSU bank do you think? Because अभी हम एक extensive chart discussion करेंगे before we move on to small and mid cap index. Okay. PSUs, HDFC versus SBI. HDFC Bank also, yes. HDFC banks have very strong charts. Not to disagree, I agree with everyone. So friends, PSU banks, yes, they look stronger on charts, right? No doubt about it, right? But PSU banks, mein, I would like to kind of go deep dive into this, right? Because PSU banks as a sector, I've been bullish for the last few weeks, right? And of course, especially what I believe, seeing the charts, right? तो हम charts के बारे में एक discussion करते हैं. So, as many have mentioned as PSU banks being strong, right? And you have taken names also, right? So, PSU banks का structure अगर आप देखें, right? तो जो structure lower high lower lows का था अब तक, right, has turned into higher highs and higher lows, right? So that is a big positive, right? जो structure अभी lower highs and lower lows का था, that has now turned into higher highs and higher lows because it has made a new higher high PSU banks, right?
which is a big positive. It has kind of formed a bottom at 6,177, right, which is again was a very important zone because यहाँ से multiple times it has bounced back, right, and now the trend is also positive. So this is a big positive for the PSU banking space. Now it is taking support at 21 DEMA and moving. So 21 DEMA now becomes a very important level for the PSU banks, right? And PSU banks में one bank which is looking very strong, right? जिसका चार्ट डिस्कशन हम करेंगे लास्ट में, that is of course Bank of Baroda, which we'll be discussing at the end, right? इसका चार्ट डिस्कशन हम करेंगे with a proper disclaimer again कि whatever we discuss is purely for educational purpose, right? So yes, PSU banks look stronger. Yes, you're right. And उसका रीज़न में मैंने बताया कि उसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है. It is turning back from lower high, lower lows to higher high, higher lows, right, which is a positive. And plus, I would say PSU banks में if you see, it's a good breakout after long consolidation. अच्छे consolidation के साथ एक breakout हुआ है with again macro factors also being positive, right? Coming to small and mid cap index, small cap index, great support zone. मैंने पहले भी आपको दिखाया था ये ट्रेंड लाइन, बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट जोन था. एग्जैक्टली वहाँ से स्मॉल कैप इंडेक्स बाउंस बैक एंड नाउ इट इज बैक नियर ऑल टाइम हाइस, राइट, विच इज अ बिग पॉजिटिव. यस, आई थिंक नाउ पोर्टफोलियोज आर समथिंग विच हैव आल्सो बाउंस बैक. सो हाउ मेनी ऑफ यू स्टिल देयर जहाँ आपको लग रहा है कि पोर्टफोलियो अभी भी डेड है? Because then there is something wrong with your portfolio, because the index has bounced back strong, and in fact good stocks have also bounced back, and they are now back to the levels from where they had actually started falling. So कितने लोग ऐसे हैं जिनका portfolio अभी भी has not recovered or maybe it's still weak? Quickly tell me fast. So friends, small cap index एक अच्छा सपोर्ट लिया and it gave a breakout over here, right? A strong breakout again. Trend is now positive. This is a strong resistance zone, 19,700. If it crosses this, I think that would be an all-time high breakout, right? So yes, recovery very good. And a small cap recovered a lot. Absolutely. So ये मुझे लगता है small and mid caps have done very well, right? Mid cap index is still to cover up, but small cap index ने बहुत ही अच्छी रैली दी. That's why you have seen small cap stocks do very well. Okay, कुछ stocks हमने भी discuss किया था which have done exceptionally well. Okay, and in fact, as we are discussing in market क्या लगता है, plus we had told it to our students also कि जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होता तब तक डरने की बात नहीं है, बिकॉज इट्स अ ट्रेंड लाइन विच स्टार्टेड ऑन 2023 मार्च, जहाँ से बुल रन चालू हुआ था, राइट. 2023 मार्च वाज द स्टार्ट ऑफ दिस बुल रन, एंड वहाँ से हमने ये ट्रेंड लाइन पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखा, राइट. एंड नाउ तो ट्रेंड इज अप, राइट. सो मुझे लगता है कंसोलिडेशन यहाँ पे हो सकता है, बिकॉज इट्स रैली हैज बीन वेरी स्ट्रॉन्ग इन स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स, राइट. So a consolidation can happen, but what I believe is stock specific rally will continue, right? Because December month ऐसे ही हमने देखा है कि it's a month where FIs go to holidays, right? And overall it's a good month, right? Normally ज़्यादा negativity नहीं होती, right? So जिनके अभी तक portfolio recover नहीं है, I think you should rethink which stock you're holding, because अगर वो इस market में भी recover नहीं हो पा रहा है, मतलब there should be a thought process which you should provide whether why you are holding that stock, because इतनी अच्छी रिकवरी, इतनी सुंदर रिकवरी में एटलीस्ट आपका स्टॉक should have recovered very fast, right? So those who are still find that आपके stocks recover नहीं हो रहे हैं या फिर recover नहीं हुए, you should give a second thought, and always I have said कि stay with strength, because strength stocks ऐसे आपको फ्रेंड्स याद होगा मैंने एक स्टॉक कैपेसिटी इंफ्रा डिस्कस किया था, right? Again, is from disclaimer from our side, pure for education purpose. It was over nearby here जब हमने डिस्कस किया था 330 340 लेवल्स पे. तो जैसी मार्केट ने रिकवर किया, इट हिट्स अ न्यू 52 वीक हाई, इनफैक्ट ऑल टाइम हाई के आसपास भी इसने हिट किया, राइट. प्रीवियस ऑल टाइम हाई के आसपास, या प्रीवियस ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस किया, राइट.
तो फ्रेंड्स ऐसे स्टॉक्स में हमें रहना है कि जब मार्केट रिकवर करे हमारा स्टॉक ऑल टाइम हाई हिट करे, और जब मार्केट नीचे जाए, ये भी नीचे गया था बट उतना नीचे नहीं गया, फेल ऑलमोस्ट जस्ट 20% ऑन द हाइज, वेट इंडेक्स फेल 20% ऑलमोस्ट, राइट। सो हमें हमेशा ऐसे स्टॉक्स में रहें जहाँ जब रिकवरी होए तो स्ट्रांग होए, और जब गिरे भी तो नॉर्मली आपने देखा होगा 30 से 40% इज वॉज एन एवरेज करेक्शन एनी स्टॉक। जो स्टॉक 30% से कम गिरे from the highs, it means they are good stocks, right? And of course main is the recovery, so the recovery also happened very fast, okay. Again friends, मैंने last time भी कहा था crude oil ट्रम्प साहब आने से it's a big positive for us because crude will be in control, and crude normally उनके पिछले ट्रेंड में नेगेटिव भी था, मतलब इट वेंट डाउन ओनली एंड एक्चुअल में नेगेटिव तक चला गया था, राइट। आप देख सकते क्रूड का लो -40, but of course it was not tradable, so that was there, but normally wars भी अभी कम हो चुके हैं एंड ट्रम्प साहब आने से क्रूड के बढ़ने के चांसेस काफ़ी कम हो गए। द मेन पॉजिटिव फॉर अस द डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स जब तक ये 107-8 के नीचे है तब तक इट्स बिग पॉजिटिव, बिकॉज जितना ये गिरेगा उतना पैसा, अब देखो एफ जैसे डॉलर इंडेक्स गिरना चालू हुआ, एफ की जो सेलिंग है वो कम हो गई, राइट। अब वो 5,000 10,000 करोड़ का फिगर आप नहीं देखते हो, अब 500,000 करोड़ प्लस माइनस देखते हैं। एंड उन्होंने, अगर हम डेरिवेटिव्स डेटा भी देखें, राइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डेरिवेटिव डेटा भी हम देखें, राइट, उसमें भी एफ ने ऑलमोस्ट अपने शॉर्ट्स कवर कर लिए। जो एफ के शॉर्ट ऑलमोस्ट 2,20,000 कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, अब वो सिर्फ 40,000 रह गए। So it's clearly visible that FIs are also coming back very strongly, right? तो उनको खरीदना तो पड़ेगा, right? So how many of you understand this data? Because this is a very very important data and follows very religiously. आप देखो जब से FIs ने 2 लाख से कम करना चालू किया 18 नवंबर से, राइट, तब से मार्केट्स में एक अच्छी रैली बनी है, राइट। सो 18, 19, 20, 21 जैसे जैसे कम हुआ, आप देखो 18 नवंबर के बाद से मार्केट चल रैली, उसके बाद थोड़ी सी रैली हुई और एग्जैक्ट रैली यहाँ से चालू, फ्रॉम वेयर द एफआई स्टार्टेड शॉर्ट कवरिंग, राइट। आप स्मॉल मिड कैप में देख लो बाइंग कब से चालू हुई, 20 नवंबर के आसपास, एंड द एफआई स्टार्टेड कवरिंग शॉर्ट्स 18, 19, 20 वाज क्लोज, 21 तक भी 2 लाख था, उसके बाद 22 तारीख को उन्होंने मेजर कवरिंग किया, वहाँ से कवरिंग होते जा रही, राइट। सो द एफआईज आर कमिंग बैक एंड ऑफ कोर्स शॉर्ट कवरिंग प्लस फ्रेश बाइंग रैली, एंड नॉर्मली हमने हिस्टोरिकली भी देखा डिसंबर इज अ पॉजिटिव फॉर द मार्केट्स, ठीक है। अभी भी मेरा स्टांस ये रहेगा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, बट चार्ट्स आर बुलिश एज ऑफ नाउ। कोई भी मुझे कोई भी इंडेक्स ऐसा नहीं लग रहा है जिसमें वीकनेस है, जिसमें स्ट्रेंथ नहीं है, राइट। एंड सब इंडिसेस हैव गिवन गुड ब्रेकआउट, यस। हमें 21 डेमा को एज अ क्रूशियल लेवल अप समझना है, और वही हमें एक काइंड ऑफ लेवल दिमाग में रखना है कि उसके नीचे हमें बुलिश ज़्यादा नहीं रहना है, उसके ऊपर हमें बुलिश रहना है। स्टॉक स्पेसिफिक रैली विल कंटिन्यू। सिल्वर फ्रेंड्स हैव बीन साइडवेज फॉर फ्यू वीक्स, काफ़ी लोग के मैसेज भी आए, सो येस इट कैन हैपन कि जब एक एसेट क्लास रिकवर करता है तो सेकेंड इज काइंड ऑफ साइडवेज, बट इट्स फाइन, हमारा लॉन्ग टर्म व्यू इज स्टिल इंटैक्ट, राइट। एंड हर बड़े डिप्स में आपको सिल्वर ऐड करना चाहिए, दैट द व्यू रिमेंस द सेम, राइट। एंड वो टेक्निकल प्लस फंडामेंटल, आई think both ways, okay. In fact, I'm more bullish on silver than gold. I've already discussed this various times, okay. Dollar index plus the bond yields, दोनों जब यूएस में कम होते हैं, अगेन जब ये कम ज़्यादा होंगे तब हमारे एफआईज रिटर्न करेंगे इंडिया में, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ट्रैक दीज टू थिंग्स, ओके। सो फ्रेंड, दिस इज टेक्निकली अगर हमें ट्रैक करना है तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज़ें का चार्ट, डॉलर इंडेक्स और यूएस बॉन्ड यील्ड्स, ये दोनों जब तक स्ट्रॉन्ग है, अब ये दोनों जब तक वीक है तब तक हमारे इंडिया में पैसा आते रहेगा, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके। सो फ्रेंड्स, अब मुझे आप ये बताइए कि विच सेक्टर यू बिलीव कैन बी द आउट परफॉर्मर फॉर कमिंग वीक्स, राइट। कौन से सेक्टर पे हमें फोकस करना चाहिए, एंड again with a simple one line reason if you can provide, because I want to know from you, and of course फिर मैं of course डिस्कस करूँगा कि कौन सा सेक्टर और स्टॉक्स हमें देखने चाहिए। जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बताओ
कि कौन से सेक्टर आपको लगता है हमें नेक्स्ट वीक वॉच लिस्ट में रखने चाहिए और क्यों? ऋषभ जी, सिल्वर पे मैंने अपना व्यू बता दिया है. द व्यू इज बुलिश फॉर लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म में थोड़ा साइडवेज है. $131.5 is crossed, then I think it can give a fresh daily breakouts. So JG is selling PSU banks, Rishabh ji is selling power, chemicals, Milan ji is selling healthcare and pharma. Okay. बाकी सब क्या लग रहा है आपको? So PSU banks definitely मैंने अभी डिस्कस किया भी, and this is looking very good to me, right? Both technically and fundamentally with the RBI policies and the RBI CRR cuts, right? Bank and metals, defense, railways, okay, power, FMCG, okay. So yes, I think एक तो PSU banks है. निफ्टी IT में मैं हमेशा ही bullish रहा हूँ. Again I'm still very bullish, right? IT stocks are the ones which have again hit new all-time highs, right? Tech Mahindra which we have discussed extensively, देखिए मार्केट रिकवर हुआ तुरंत ऑल टाइम हाई. तो फ्रेंड्स ऐसे स्टॉक्स में हमें बट डटे रहना है जहाँ पे जब मार्केट गिरता है तो कम गिरे और मार्केट रिकवर होते हैं ऑल टाइम हाई, राइट? बट आई थिंक वन सेक्टर विच इज काइंड ऑफ रिवर्सिंग फ्रॉम द लोज, निफ्टी ऑटो. अब देखिए फ्रेंड्स, ऑटो इंडेक्स वाज वन ऑफ द लैगार्ड्स, राइट? सब कुछ खराब था, सब कुछ आई वुड से वाज बैड इन दिस सेक्टर. इस बार भी जो डेटा आए थे बहुत खास नहीं है, बट एक ट्रायंगल, छोटा सा ट्रायंगल फॉर्मेशन कर रहा है एंड इसका ब्रेकआउट मुझे लगता है आने वाला है. अगर ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट आता है, आई थिंक देन ऑटो सेक्टर कैन बी अ बॉटम फिशिंग सेक्टर, राइट? बिकॉज द वर्स्ट इज ओवर. चीज़ें जो वर्स्ट थी वो ख़राब हो चुकी, मतलब वो प्राइसिंग हो चुकी, राइट? एंड एक अच्छा डिसेंट करेक्शन आ चुका है. आई वुड से यहाँ एक अच्छा सपोर्ट है, एक अच्छा बेस है, 6-8 महीने का सपोर्ट, राइट? सो ऑटो सेक्टर इज वन विच कैन बी अ बाउंस बैक ट्रेड इफ ट्रायंगल ब्रेकआउट हैपन्स, राइट? अगर फ्रेंड्स आपको ये ट्रायंगल ब्रेकआउट ये समझ में नहीं आ रहा है, वी हैव लॉन्च्ड अ टेक्निकल एनालिसिस बेसिक कोर्स, राइट? इट्स अ कोर्स वेयर एट योर कंफर्ट यू कैन लर्न टेक्निकल एनालिसिस बाय वाचिंग रिकॉर्डिंग्स एट योर कंफर्ट, राइट? ठीक है, इसमें 8 से 10 क्लासेस की रिकॉर्डिंग है एंड दिस कैन बी अ गुड आई ओपनर फॉर यू फॉर लर्निंग टेक्निकल्स, राइट? If you think it's a course which is worthwhile to you, we'll be sharing a special coupon code, right, where you can get this course at जो 30% डिस्काउंट था है, प्लस एडिशनल we will give you from our side 20% more. So this course will be available at a price of 2,500, right? Just till tomorrow evening, right? So those who want to join the course, you can just WhatsApp our team at 8240837252, or I'm sharing the link of the course in the chat box. You can just go make the payment and you will get instant access where you can learn technical analysis, right? So I've already shared the link of the course on the chat box, right? You can just, don't worry, we'll be discussing about all the stocks and of course your stock specific queries also, right? But those who are serious learners, those who want to kind of learn as well as earn from us, right, they can just WhatsApp on this number and we'll be sharing all the coupon codes with you. So this offer is valid only till tomorrow evening, okay? So 8240837252 is our number. जिनको ये टेक्निकल एनालिसिस सीखना है कि कैसे ट्रायंगल्स बनते हैं, कैसे पैटर्न्स बनते हैं, कहाँ स्टॉप लॉस रखना चाहिए, कहाँ टारगेट रखना चाहिए, फ्रॉम बेसिक्स. इफ यू डोंट नो एनीथिंग एंड स्टिल you want to learn this, you can join the link, right? You can use the code CREALTH20 and you can get special 20% extra off on the recording course. You can watch the recordings. ये आपको 2 साल का फ्री एक्सेस रहेगा. कभी भी आपके मन चाहे आप जब मन रिकॉर्डिंग देख सकते हो, right? And of course the same live class also we have. Those who want to join it live, they can also join with special 20% off offer, right?
Yeah, so coming back to this. So फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये अगर आपको टेक्निकल समझ में आता है तो निफ्टी ऑटो का आपको व्यू मुझे पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. ट्रायंगल ब्रेकआउट होगा, अपने आप आपको वैसा ऑटो स्टॉक खोजना है जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है, जो इस फॉल में सबसे कम गिरा है, राइट. एंड आई थिंक ये मैं एक होमवर्क देना चाहूँगा सबको, राइट. दोज हू मैसेजेस आवर टीम with proper name of the stock and your discussion and your view, you will get a special offer from us, right? So if I this I'll give as a homework, right? Nifty auto stock, but I think this can be a dark horse sector, right, for the coming weeks. Okay, so this is all. आज क्योंकि संडे है and I think काफ़ी शादियाँ भी है and I think a lot of people are of course watching Pushpa 2 also, so I don't want to take much time, right? So I'll be going straight away into the discussion about Q&A, right? So आपके जितने भी questions है, right, I would suggest more to keep it on the markets rather than stock specific, right? But stock specific also I'll like to answer, right? And friends, now you can also book a one-to-one call with me, right, where you can discuss about what difficulties you're trying to face on markets, right? And we'll try to solve, because of course in tough phases we always want our community members, our students, and our all the attendees and joinees who normally join our webinars and our lives, right, to kind of learn as well as earn, right? So you can WhatsApp our team and we will definitely they will definitely try to schedule a call one-to-one. Okay, so this is there. Okay, एंड जो हमारे नॉलेज कम्युनिटी ग्रुप्स के भी पार्ट नहीं है, आई विल शेयर द लिंक ऑफ द नॉलेज कम्युनिटी ग्रुप्स वेयर वी रेगुलरली शेयर अबाउट मार्केट इनसाइट्स, about different charts, about how the markets are looking, right? So you can be a part of those groups. Okay, I'm sharing the link in the chat box. Okay, yeah, now you can ask your questions. Please tell the time frame also, right? कि आप तो स्टॉक मुझे चाहते हैं कि मैं उसको चार्ट देखूं. Just tell me the time frame also so that I can suggest you or guide you accordingly. Again, a disclaimer: whatever stocks we discuss or I share the charts is purely for educational purpose. These are not recommendations. Please consult a financial advisor. We're not responsible for any of your actions. No, this one-to-one is totally free. It's not chargeable, right? Okay, so Ashok Lane. So Ashok Leyland has been one of the stronger stocks, right? So if you're holding, keep a trading stop loss of 226 and keep holding this. Stock charts look good, strong. Amber short term. So Amber short term I think looks little weak, right? And you should keep a stop loss of 5,780 or 5,760. Overall chart structure is a little weak. Market recover में भी recovery नहीं दे पा रहा है, right? So I would suggest you to kind of switch your trade to some other stock if it's a trade, right? So Zomato, someone has asked about Zomato. So Zomato, I think Swiggy, both charts are very strong, very good strong breakouts. If you're holding, keep a trailing stop loss of 290 and keep hold this. Short जो charts है काफ़ी strong है. So National Aluminium, okay. Nalco charts are very strong, higher high, higher low. If you're holding, keep a stop loss 240 and keep holding this. Top looks very strong. Okay, Swan Energy. So Swan Energy charts are very strong. It was a good मारुबुजू कैंडल से दो यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स है वो समझ गए होंगे. मारुबुजू और मास्टर कैंडल का ब्रेकआउट था यहाँ पे. So they would have traded this breakout and of course very strong charts. Once it breaks 760, this can do very well because 760 is an all-time high resistance, right? But overall, you should hold it. Stock looks very strong, right? And if you are holding, keep a trailing stop loss of, I think, around 700 levels, right? LTTS, I think it's purely sideways. It's a master candle
5442 5220, right? Just the break होता है उस तरह move आना चाहिए. Those who are still wondering what's a master candle, you can join the recording course and you can learn everything in that, right? बहुत सिंपल वे में हमने समझाया है कि कैसे आप टेक्निकल्स को समझ सकते हैं, राइट? The link is already shared on the chat box, right? And you can join it by just clicking on the link. Okay. So next, so LTTS of course master candle का breakout या breakdown का wait करना चाहिए आपको, right? And this special offer, do remember, it will end tomorrow evening, right? So don't miss this special opportunity of joining the course online, right? And you can learn at your own speed. Okay, can we look for Vedanta for 2 to 3 years? So Vedanta, I think chart structure is very strong. Breakout, retest also done. And yes, I think you should keep holding. Your trailing stop loss should be around 430 levels. Microfinance sector, exchanges or platform sector. Okay, microfinance sector can be a bounce back, but overall sector में अभी भी एक दो क्वार्टर का काफ़ी पेन बाकी है, right? Health insurance stock, it is budget. Yes, it is buzzing due to GST rate cut, but I think आपको ट्रेड के साथ, बिकॉज अगर वो नहीं आता है देन आई थिंक दे कैन फॉल ऑल्सो दैट वेज, राइट? सो M&M पे आई थिंक किसी ने क्वेश्चन पूछा है. सो M&M, आई थिंक चार्ट स्ट्रक्चर इज वेरी स्ट्रॉन्ग. So structure is very strong. Keep holding the stock, right? And if you're holding, keep a trailing stop loss of 3000 levels, right? And it's the strongest, one of the strongest in the auto sector, right? Okay, GMR Power. Okay, GMR Power, I think chart structure is not that strong, but yes, 120 का अच्छा resistance है, 120 cross करता है then it can do well. Last day it was a bullish engulfing candle, right, with the good volumes. So you're holding, keep a stop loss of 112 and keep holding this. Eicher Motor also fall less in this fall. Yes, you can say Eicher Motor is also one of the good strong stocks, but it has to break out over 5100 to give a nice move, because it's been consolidating for the last 1 year or the last 6 to 7 months, right? Okay. I've already answered most of the questions. TBZ for 5 to 7 years. Okay. TBZ for 5 to 7 years. अगर आप long term भी पूछेंगे तो yes, you can keep holding this. Structure is very positive. एक बहुत बड़ा breakout 2012 के बाद हुआ है, retest भी हो चुका है. Yes, you should keep holding this and your stop loss should be around 220 levels. Okay, Hind Copper, I would request everyone not to ask more than one question, because I've already a lot of questions to answer. Hind Copper, if you're holding, keep a trailing stop loss of 216, keep holding this. Chart structure is positive. TVS Chakra, okay. I think chart structure weak hai. It's a breakdown also. So if any valley, you should kind of exit and move to a good stock. New entry in Zomato, I think on a retest you can maybe see to it, right? Not comment much on that. LIC, if you're holding, मैंने last time बताया था 880 पे एक बहुत strong support level है. Keep holding this with a stop loss of 880 levels, right? Supriya Life. Supriya Life, I think chart structure is strong. If you're holding, keep this is a stop loss of 700 if it's a weekly long-term holding, and short-term है तो 750 का, right? Structure is very positive and you should keep holding this, right? Okay, Om Infra. So I think breakout last day, right, with strong volumes. If you're holding, keep holding this, and your trailing stop loss should be around, I think, 165 levels, the mid part of the breakout, right? So I think काफ़ी सारे लोगों के मैंने क्वेश्चंस आंसर कर दिया हूँ मैं. डिस्कसिंग अबाउट BOB, यस BOB का चार्ट्स हम डिस्कस करेंगे बिफोर वी एड. सो फ्रेंड्स, BOB का स्ट्रक्चर मुझे डिस्कस करना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इज सी द मल्टीपल बॉटम्स इट हैज़ मेड, राइट? तो स्ट्रॉन्ग इज मेकिंग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, वहाँ से एक बुलिश कैंडल बन रहा है, राइट?
दीज आर द रिस्क रिवॉर्ड जोन. मैंने आई थिंक लास्ट टू लास्ट मार्केट क्या लगता है मैं डिस्कस किया था, रिस्क रिवॉर्ड जोन पे हमें ये सब छोड़ना नहीं चाहिए विद बुलिश कैंडल्स. एंड सी वहाँ से एक अच्छी रैली बनी. अब यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाई करने में प्रॉब्लम क्या है कि इट हैज़ मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन्स. अब यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अब यहाँ पे भी 275 में भी रेजिस्टेंस है, फिर 275 क्रॉस करेगा तो देयर इज अ रेजिस्टेंस ओवर एट 290 ऑल्सो. तो दे मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन. तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा रादर देन आई वुड से गुड रिस्क रिवॉर्ड ओवर है, राइट. तो मैंने लास्ट टाइम भी जो डिस्कस किया था. So risk reward always is a very important thing which I also emphasize a lot in our classes कि risk reward बिना आप trading कर ही नहीं सकते, because ultimately risk reward will help you to make a successful long term trader and investor as well, right? So I would take the last question. SBI card for 1 month. I hope this discussion helps you, right? Bank of Baroda ka. For 1 month, I would say if you're holding, keep a trading stop loss 705 and keep holding this structure. एक बदलाव आया है, it's a higher high low after a long time, but 705 should be a stop loss, right? So friends, keep searching for strong stocks, be optimistic. I think December month overall should be good, and then of course the eyes will be on Q3 results in January, right? So thank you so much everyone for joining. It was a pleasure talking to you all. I wish you all a great trading and investing week ahead. Bye bye, Shubhratri, take care, and keep sharing your feedbacks with us, because learn as well as earn, this is our motto, and this is always why we do market Kya Lagta Hai, right? Rest you can WhatsApp our questions on our team, or maybe book a one-to-one. We will try to resolve your queries, right? But stay optimistic, stay काम. एंड ट्रेडिंग में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, नो कैपिटल मार्केट्स. तो कोई भी ऐसा अग्रेसिव ट्रेड ना ले जहां आप कैपिटल को प्रिजर्व नहीं कर पाए, बिकॉज कैपिटल है तो सब कुछ है, राइट. So thank you so much everyone for joining. It was a pleasure talking to you all. I always love to kind of clear doubts and kind of guide you to the right pathway in markets, right? So I hope I've been able to do it and you added something to your knowledge today. Thank you. Bye bye. Good night. Shubhratri. Take care. And I'll see you all next week with more learning and more earning.